Hello class 10, welcome back to our channel. So class 10, we all are doing our book Introduction to Financial Market, that is FMM. And today we are going to start our chapter 2, that is Securities. As we have done our first chapter, Investment Basics, and in this chapter we'll learn about in detail about the securities. So here the first topic, as you can see, that what is meant by securities. So each and every option that you have for the investment, like shares, bonds, scrips, books, stocks, or other marketable securities, those have similar in nature. Like incorporate company होता है या फिर किसी corporate ने इशू किए या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं. मे बी ऑल आर डेरिवेटिव्स ऑफ सिक्योरिटीज or investment scheme in which we'll get some profit or interest. So all these things, all these instruments where we can invest our money, these all are called securities. And here we have one act related to securities, like the Securities Contract Regulation Act, that is SCRA 1956. So under this act we are including all these things. Yes, so don't forget, आपके लीगल एक्ट्स हैं जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. सो वन बाय वन जैसे हम इम्पॉर्टेंट किसी वर्क पे काम करेंगे, किसी फाइनेंस टर्म पे काम करेंगे, तो वन एक्ट इज़ देयर. सो उस एक्ट का हमें नेम भी लर्न करना है. फाइन. सो हेयर दिस इज SCRA विच इंक्लूड्स ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स. Here we can say all these are securities. Yes, now the point is सिक्योरिटीज़ तो हैं, बट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट्स. कुछ तो फंक्शन भी होना चाहिए. बिल्कुल, अगर हम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हैं या फिर हम किसी वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, तो द वेजिटेबल मार्केट इज़ मेंट फॉर द वेजिटेबल्स ओनली. येस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेरी गुड. बट हेयर दिस इज़ ऑल अबाउट द सिक्योरिटीज़ मार्केट. सो मीन सिक्योरिटीज़ क्या है? ऑल द शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, each and everything related to our investment policies. So it means कि इस market में हमें यही सब मिलने वाला है. So definitely securities market is a place where buyers and sellers of securities can enter into transaction to purchase and sell. What they will purchase and sell? They will purchase and sell the shares, bonds, debentures, etc. So here basically it's very simple. The market is related to securities only, where the buyers like us, investors, and the companies can enter and they can do the transaction, they can do sale and purchase of bonds, shares, etc. So here market performs a very important role. You can see that it enable the corporates, entrepreneurs. Now the point is 10th standard. Now it's time to understand that why the securities can be issued in the market. Just only one reason, to raise the resources. जब companies को resources की ज़रूरत है, so they will definitely raise, they need to raise their capital, so they will definitely issue some securities in the markets to complete the business ventures. So they have to connect, they have to contact with the publics also. Public के साथ contact करना है. So public को contact करने के लिए उनके पास यही है कि public को securities दी जाए. So they will definitely show their interest to purchase the bonds and debentures, etc. So market is the very trustful place where we can purchase or sell the securities. Okay, so in this we covered the function of securities, even the transfer of resources from those having idle resources. Like जिसके पास idle resources है, जिसके पास extra पड़ा है, आपके पास extra money पड़ा है और किसी को ज़रूरत है, somebody have a need for them उस resources की, तो here the security markets playing a role of mediator, where idle resources को use किया जाएगा उसके थ्रू जिसको ज़रूरत थी. येस, सो दीज आर द चैनल्स जहाँ पर आप सेविंग्स अपने इन्वेस्टमेंट्स को दिखा सकते हो और जिसको ज़रूरत है वो उसको हेल्प ले सकता है. सो सेविंग्स आर लिंक्ड टू इन्वेस्टमेंट्स बाय अ वैरायटी ऑफ इंटरमीडिएट्स
through a range of financial products called securities. So I hope everyone now is unable to now clear to everyone that what do you understand by term securities and what is the function of securities market. Yes. So here next topic, here we can see that securities, like कौन से ऐसे आपके इन्वेस्टमेंट के सिक्योरिटीज़ के ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. तो वेरी सिंपल, it's not like very difficult, like shares हैं, government securities, derivative products that we discussed in the previous chapter also, and the mutual funds. Here all these are the securities where we can invest our money, and at which place we are investing all these things in the securities markets only. Okay, now the next one is here very important thing, regulator. रेगुलेटर मीन्स जहाँ पर आप रेगुलेट करेंगे. रेगुलेट करने की ज़रूरत बिल्कुल है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द एक्ट ऑल्सो. सो एक्ट क्यों बनाए जा रहे हैं बच्चा? एक रेगुलेशन रहे, उसके ऊपर एक लोगों का ट्रस्ट तभी होगा जब उसमें एक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे, गवर्नमेंट एक अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा देगी. तो येस, सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है. डू यू थिंक इट रियली नीड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज़ मार्केट्स? So yes, the absence of condition of perfect competition in the security market makes the role of the regulator extremely important. तो ऐसा ना हो चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएं. अगर मैंने कहीं ट्रस्ट करके किसी बॉन्ड को, शेयर को, स्टॉक मार्केट में कहीं पर मनी डाल दिया एंड आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज कि मेरे साथ कुछ गलत हो गया, तो हु विल रेगुलेट ऑल दीज मार्केट्स? तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी इमीडिएटली. तो हियर येस, वी नीड वन रेगुलेटर ऑल्सो जो मार्केट में अपनी एक स्ट्रॉन्ग इमेज बना पाए, एंड द पर्सन एंड द इन्वेस्टर हु वांटेड टू डू इन्वेस्टमेंट, दे कैन इंश्योर, उनको भरोसा हो पाए कि येस दिस मार्केट इज़ गुड फॉर अस एंड हम उसमें मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो येस, देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ रेगुलेटर ऑल्सो. सो हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटी मार्केट्स? सो हियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी for regulating the security market is shared by the Department of Economic Affairs. It's DEA, Department of Company Affairs, it's DCA, and Reserve Bank of India, it's RBI. And very, very important, Securities and Exchange Board of India, it's Sebi, SEBI, Sebi. So all these are the regulating bodies where here we can say those are regulating the securities markets, and people can trust and they can participate in a desired manner. So the market continue to be a major source of finance for corporate and government, and the interest of investors are protected. So here the protection will be given by all these bodies which are working on the national level in our nation. Okay, now in detail we'll learn about the Sebi, that what is Sebi and what is its role. So Sebi is basically, as you can see the full form also, the Security and Exchange Board of India, and it regulates the security market. And here one more act you can see, like under the Section 3 Sebi Act 1992 provides the establishment of Securities and Exchange Board of India with protecting the function of, first one is protecting the interest of investors in securities. Protect करना, एक surety देना investment को, this is one of the job, one of the main function of Sebi. Then it's also promoting the development of securities markets. नए नए schemes को launch करना, promote करना, this is also the function of Sebi. And regulating the security markets also. Properly run कर रही हैं market या नहीं, कुछ problem नहीं आ रही हैं, ये सब देखना भी हमारी Sebi के functions में आता है. So all the stock exchanges को देखना, registering and regulating the working of stock brokers also, कि कहीं कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो रहे हो, प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, ईच एंड एवरीथिंग उनको रेगुलेट करना.
सुपरवाइज करना, आपको परमिशन लेनी है तो यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन टू सेबी इफ़ यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ जॉब लाइक स्टॉक ब्रो, आपको कहीं ना कहीं से रजिस्ट्रेशन कराना है। यस, एक अभी हमें कोई दिल्ली के रोड्स पे या इंडिया किसी रोड पे आपको यू वांट टू राइड अ बाइसिकल और यू वांट टू राइड अ कार, आपको कार भी ड्राइव करनी है तो यू नीड अ परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस, license you have to take. Similarly here in this market also SEBI is the body here जो सब कुछ रेगुलेट कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। इवन इट ऑल्सो प्रोहिबिट द फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फॉर्म, अगर कोई नया स्टॉक डालना है, सब कुछ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय द सेबी। प्रोटेक्ट करना, कोई भी इंक्वायरी है, ऑडिट करना स्टॉक एक्सचेंज को कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस को देखना, म्यूचुअल फंड्स को, इवन जितने भी आपके फाइनेंस से रिलेटेड बॉडीज़ हैं उन सब के ऊपर अगर एक कंट्रोल है तो सेबी का है, जो सारा का सारा रेगुलेट करना, प्रमोट करना एंड एक सुपरविजन करना सो दैट द इन्वेस्टर्स कैन टेक इंटरेस्ट इन इन्वेस्टमेंट एंड protect the interest of investors also. So this is the function of SEBI, which is very very important for India. Okay, class 10, the next topic will cover in next session now. Thank you.